UPSC preparation, as we see that answering map-based questions, maps are crucial for scoring in map-based question in UPSC CSE prelims, because in these questions what happens कि if you know, then you can score, ठीक है, +2 marks, and if you don't know, you can skip it, because in these questions guessing, what we used to see is guessing is irrelevant. ठीक है. Then locational awareness. Maps develop locational awareness, facilitating the accurate identification of landmarks for different question types. So you can, whenever you are reading the current affairs, and if you come across with some locations of specific location or some specific locations, mark them on your atlas. ठीक है. Mark them on your atlas, because they will help you in your mains as well. Why? Because they will provide, है ना, or they become a source of examples. And if you are quoting, है ना, recent examples, then your answer will be more credible. The third aspect is geographical concepts. Geographical concepts means कि they will help you in visualize and comprehend fundamental geographical concepts, simplifying the response to related questions. For example, the rivers, the plateaus, है ना. So these things or these aspects will also help you in enhancing your mains answer. Then the time effect solution. Proficiency in map reading ensures effective, efficient time management, which I have also talked in the first point, answering map based questions में, कि if you know, then go ahead, and if you do not know, then leave it. ठीक है. Now talking about the nature of the questions, कि कैसे questions पूछे जाते हैं. So nature of the questions हैं world map. We know that we can divide the geography into two, the world geography and the Indian geography. So we also divide the mapping on the basis of these two parameters, the world map and the India map. So what will be, we are looking into the world map. The political locations means the countries, their capitals, okay, boundaries and the neighbors. Then physical mein what we are looking, mountains, plains, rivers, etc. Physical phenomenon and ocean current related. ठीक है. So this is also again an important aspect from where UPSC uh, will definitely ask. ठीक है. इंडियन मैप में भी हम देखेंगे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, आइलैंड, रिवर्स, एनवायरनमेंट में से रिलेटेड वेटलैंड्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स एक्सेट्रा, एंड द करंट रिलेटेड लोकेशंस फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, जो भी हमारी न्यूज़ में है. ठीक है. इसके अपार्ट भी, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल दीज aspects, we also venture into different things. We will look those things through the with the help of the questions. So let us have a look on previous year questions. See, this is the question. Very basic question. Siachen Glacier is situated to the east of Aksai Chin, east of Leh, north of Gilgit, north of Nubra Valley. Now, you have to know, or you must be aware about the head, है ना, head of India. तो ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, and you cannot skip this part. So be aware, be alert, whatever comes in news, mark it on your atlas and locate it on your atlas. ठीक है. So Siachen Glacier is situated to the north of Gilgit. Answer will be north of Gilgit. See here in this map, we have shown this. The Nubra Valley acts as a gateway to the strategically important Siachen Glacier. Where is the Nubra Valley? Nubra Valley. Where is this Nubra Valley? Yes. This is the Nubra River, and we call this as the Nubra Valley. ठीक है. ये Nubra Valley है. तो क्या बोल रहा है, एट द गेटवे टू द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर. तो यहाँ से हम सियाचिन ग्लेशियर पहुंचते हैं, एंड द काराकोरम पास. ठीक है. देन द काराकोरम पास इज द नॉर्थ वेस्ट साइड, कनेक्ट्स द वैली विद जिंगजियांग, चाइना. ये वाला जो पार्ट है, इसको ये कनेक्ट करता है. ठीक है. Hence option D is the correct answer. The Nubra River is a tributary of Shok River in this river system and originates from the Siachen Glacier. What we have marked is incorrect. It is north of Nubra Valley. That is why
we must be aware of the location. ठीक है, अब यहाँ पर देखो और दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो बाल्तोरो ग्लेशियर है, देन शासकाम वैली है ना, एक NJ 9842 द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द LOC, दिस इज द LOC, यहाँ पर चोरबात ला भी है, एक पास है, ठीक है। तो डिस्प्यूट इज दैट पाकिस्तान सेज दैट नॉर्थ ऑफ NJ 9842 इज लाइक दिस गोइंग towards this area, है ना। So according to them, the Siachen glacier is in their territory, but India claims that we go north of NJ 9842 in this way, so that the Siachen glacier is the territory of India, and this it is a dispute between India and Pakistan. Okay, now coming on to the next question, which of the following is geographically closest to Great Nicobar? Now you must be aware about the islands of India. दो ही तो हैं, याद कर लो, लक्षद्वीप है ना, एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार अब पता होना चाहिए कि ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, नॉर्थ में है कि साउथ में है। ऑब्वियसली अंडमान आइलैंड्स आर द नॉर्दर्न आइलैंड्स एंड द निकोबार आइलैंड्स आर द सदर्न आइलैंड्स। तो ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट आइलैंड, ठीक है। अब सदर्न मोस्ट आइलैंड होगा तो ऑब्वियसली इंडोनेशिया के क्लोज में होगा, दिस इज द ग्रेट निकोबार, and the first island of this Indonesia is Sumatra. So it will be closest to Sumatra. Great Nicobar is closest to the island Sumatra. Now, if you look the map of our Andaman and Nicobar Island, we have to learn a lot of things from here. That this is the North Andaman. You know, North Andaman is the northern point, and the Saddle Peak. Saddle Peak lies here. Saddle Peak lies in the North Andaman, is the highest peak of Andamans. First fact. Okay. Second is Barren Island. Barren Island is dormant, है ना, dormant volcano. This lies to the east of Andaman, Middle Andaman. We can see Middle Andaman. Then you are seeing these islands, है ना, these we called as archipelago, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ नेम्स चेंज हुए हैं, जैसे स्वराज द्वीप आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड था पहले, उसका नाम चेंज कर दिया है। शहीद आइलैंड है, नील आइलैंड था, उसका नाम चेंज कर दिया है। देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, रॉस आइलैंड था पहले, है ना, यहाँ पर साउथ अंडमान के पास, तो उसका नाम चेंज कर दिया। तो ये नाम भी आपको चेंज करने हैं, मतलब याद रखने हैं। सेकेंड इज दिस बैरन, थर्ड इज आर्चिपेलागो, फोर्थ इज दीज नेम्स, फिफ्थ इज this you are seeing the Duncan Passage. Duncan Passage lies between the southern Andaman and the little Andaman. So I have remember this by the acronym LSD, ठीक है। लिटिल अंडमान साउथ अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज, दिस इज द लिटिल अंडमान, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाज इन न्यूज इन 2019 or 20, है ना, when one US tourist has been killed by the inhabitants of Sentinel Islands, because this island is not approached by outsiders, and there is a strict warning for the outsiders that do not cross the or trespass into this island, otherwise you will be killed. Then the 10-degree channel. 10-degree channel is between Andaman and Nicobar Islands. Okay, तो निकोबार आइलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है कार निकोबार आइलैंड। देन नैनकावरी आइलैंड, कच्छल आइलैंड के बाद में है यहाँ पे सोम्बोरो चैनल, है ना, बिटवीन द लिटिल निकोबार एंड योर नैनकावरी एंड कच्छल आइलैंड। ग्रेट निकोबार, सी द सदर्न मोस्ट आइलैंड इज ग्रेट निकोबार, and the southernmost point is Indira Point, we call the southernmost point of Indian territory is Indira Point,
ठीक है। फिफ्थ fact is 10-degree channel, sixth fact is Duncan Passage, seventh fact is Bar, eighth fact is Somboro channel, and the ninth fact is, sorry, the ninth fact is in Indira Point. The ninth fact is Indira Point. ठीक है? Clear? Okay. Now coming on to the next question. From the ecological point of view, which of the following assumes importance in being good link between the Eastern Ghats and the Western Ghats? We all know that Eastern Ghats and the Western Ghats meet at Nilgiris. ये सबको पता है, बट द क्वेश्चन है ना आस्क्ड यू डिफरेंट नेम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्लामला फॉरेस्ट, नागरहोल, शेषाचलम बायोस्फीयर. So you have to be very specific when you are reading these types of tiger reserve, biosphere, tiger reserves, biosphere reserves, national park, wildlife sanctuaries. ठीक है? So you must be very careful about the facts. What important facts you have to remember in this? कि whether any river is passing through them, और the bordering states कौन कौन से हैं, ठीक है, या नेबरिंग टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द क्लाइमेट जोन, कौन सा क्लाइमेट जोन में ये आते हैं. तो आंसर टू दिस वाज द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. ओके, सी हियर, this is the point where Eastern Ghats and Western Ghats meet. It is also, if we talk very specifically, is the point where the Nilgiri hills are there and the Satyamangalam. This is the map. I don't think we have to go with very specific कि कौन कौन सा एरिया है इसमें, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, बट यस थोड़ा बहुत डिटेल चाहिए. फॉर एग्जांपल कितना एक्सटेंट या लोकेशन क्या है उसका. ठीक है. Okay, now let us look the next question. The favorite topic or the favorite, see this is in 23. Why? Because of um, land bordering with Ukraine. You know, Russia and Ukraine were in conflict, and that's why the question becomes an important, because why? It was in news and remain in news. Now the importance of this region becomes very less, but yes, UPSC का जो favorite area है, that is the Middle East, West Asia जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो लोग इसको यूरोपियंस इसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, वी कॉल इट वेस्ट एशिया. देन साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी, इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, 1, 2 and 3. These three are very important from the point of view of UPSC prelims examination. So see, consider the following countries. Mention countries share a land border with Ukraine: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania. लातविया नहीं है, लिथुआनिया नहीं है. ठीक है, चेक रिपब्लिक भी नहीं है. तो 4 और 5 को हटा दो तो कितना है? रोमानिया यस, हंगरी यस, बुल्गारिया भी नहीं है. ओनली टू विल बी द आंसर. बुल्गारिया भी नहीं है. लेट अस लुक एट द मैप. हियर इज द मैप. यूक्रेन, दिस इज यूक्रेन, वी ऑल नो. कौन सा ऊपर? बेलारूस, देन रशिया, यहाँ पर है पोलैंड. ठीक है, फिर बड़ा कंट्री है रोमानिया. अब छोटा छोटा देखो, मोल्डोवा, हंगरी एंड स्लोवाकिया. So these are the countries which are bordering Ukraine. Now coming on to the water bodies. Black Sea, you must know the countries which are bordering the Black Sea. Crimean Peninsula कहाँ पर है? Sea of Azov and Black Sea को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? This is called the Kerch state. ठीक है. Similarly, you have to remember, or you need to look into the countries that are bordering Caspian Sea, Mediterranean Sea. Okay, तो ये इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए. एंड दिस यू कैन really do not have to spend much of time, है ना. every day just look at the, like look at for 5 minutes on your atlas, that will suffice. ठीक है, कोई भी 5 मिनट अपने दिन के दे दो और कोई भी एक एरिया पकड़ लो और उसको बस देख लो एक बार.
ठीक है. Okay. Next question. Now this is with respect to the ocean currents, warm currents and the cold currents. पता पहले तो आपको पता होना चाहिए कि warm current क्या होता है, cold current क्या होता है. Warm current and cold currents are not like कि water warm है या cold है. They are as per the origin, कहाँ से आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर पोल से आ रहे हैं तो वो कोल्ड वाटर ही होगा. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कोल्ड करंट्स. कोल्ड करंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एरिया. ठीक है, अगर वो पोल से इक्वेटर वर्ड आ रहे हैं तो इक्वेटर का टेम्परेचर हाई है बट द वाटर टेम्परेचर इज लो. दैट इज वाई दे बिकम द कोल्ड करंट. Similarly, the warm currents are going from equator towards the pole. The polar region is colder than the equatorial region. Hence, the surrounding area is colder. That is why they become the warm currents. And we all know that through logic or through the circulations, the western parts of the continent, these faces the cold current, and the eastern part of the continent they faces or they come across with the warm currents. इतना बस बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. अब नाउ कंसिडर दिस फ्लोरिडा करंट, कैलिफोर्निया करंट, ब्राजीलियन करंट, मोजाम्बिक करंट. वार्म करंट नहीं है. कौन सा नहीं है? कैलिफोर्निया करंट इज नॉट अ वार्म करंट. बिकॉज वाई? सी द मैप. Alaska current is a cold current, warm current, sorry. California current is a cold current. California current being the part of the North Pacific Drift. ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आ रहा है ये यहाँ पर, कुरोशियो करंट से गया ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बन गया. ठीक है, दिस इज द वार्म करंट, पार्ट ऑफ अ वार्म करंट, बट ओयाशियो से मिलके ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट समहाउ थोड़ा सा कोल्ड हुआ. प्लस जो अलास्का करंट है ना, यहाँ पर क्या होता है हमारा, ट्रेड विंड्स होती हैं. ड्यू टू ट्रेड विंड्स क्या होता है यहाँ पे, अपवेलिंग होती है. अपवेलिंग है ना, अपवेलिंग की वजह से भी कैलिफोर्निया करंट क्या होता है, कोल्ड करंट होता है. गल्फ स्ट्रीम is a warm current. Again, the same principle. Labrador current is the cold current mix with Gulf Stream and become and forms the North Atlantic drift, which again become the Canary current. Canary current is again the cold current. Why? Due to the upwelling plus the temperature mix or the final mixture of the Labrador and the Gulf Stream. Norwegian current is a warm current. Why? Because the temperature, see, it is mixed with the cold water, but again, the Norwegian current is a warm current. Why? Because the surrounding temperature is low. And with respect to this surrounding temperature, the Norwegian current is warm current. Agulhas current is a warm current. Kuroshio is a warm current. East Australia warm current. Mozambique warm current. Brazil warm current. Now coming on to cold, Peru, Benguela, West Australia, Canary, California, Labrador, and the Oyashio. Okay, these are the cold currents. So therefore, आंसर क्या होगा हमारा, कैलिफोर्निया है ना. कैलिफोर्निया करंट इज नॉट अ वार्म करंट. ओके, नेक्स्ट. यस, रिवर्स. ये पूछा था, बहुत पहले पूछा था यूपीएससी ने, बट अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि पूछ सकता है. जैसा कि मैंने बोला गया, यूपीएससी हैज अ फेवरेट एरिया ऑफ 3 फेवरेट एरियाज, तो इनका पता होना चाहिए. मेकोंग रिवर अंडमान सी में नहीं आती. दिस गोज टू साउथ चाइना सी. थेमिस, आयरिश सी, नो. यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ आयरलैंड है, ये आयरिश सी है. थेमिस ऐसे फ्लो होती है नॉर्थ सी में. ठीक है. वोल्गा, कैस्पियन सी, करेक्ट. जाम्बेजी, इंडियन ओशन, करेक्ट. जाम्बेजी का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ. विक्टोरिया फॉल्स Victoria Falls you will find on the Zambezi River, and these are the loudest falls in the world. They are also known as that thunders. मतलब इतना आवाज होता है कि you can heard the sound of these falls for about near 40 kilometers. 40 किलोमीटर तक इनकी आवाज सुनाई देती है. ठीक है. Okay. See, if we see the maps or the locations, this is the Mekong River going to South China Sea. This is the Volga River coming to Caspian Sea, Zambezi River going to Indian Ocean, and the Thames River going to North Sea. ठीक है, English channel, ये भी याद रखना. Okay, coming on to the next question. Not responding. We have to wait. आ गया. Okay, Mediterranean Sea borders which of the following countries? Jordan, Iraq, Lebanon, Syria. Jordan, no, it is a landlocked country. We all know.
फेवरेट एरिया यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है, लैंड लॉक कंट्री। तो 1 को एलिमिनेट कर दो, बचा 3, 2 3 एंड 3 4, मतलब 3 तो है, लेबनान है, वी ऑल्सो नो दैट, सीरिया भी है, इराक नहीं है, इराक थोड़ा सा इधर आ जाता है, बाकी सारी इधर आते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी 3 एंड 4, सी, सी द मैप। कहाँ पर है देखो, ये मेडिटेरेनियन सी है, तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन इज द लैंडलॉक, इजराइल है, देन इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया एंड यहाँ पर मोरक्को, ठीक है। So I have also covered this part in my previous videos, and I discussed it with there, which are the countries surrounding the Mediterranean Sea. I have also given acronyms that FAT, MA, SSC की पढ़ाई में भूल गई स्लिम होना, इसीलिए उसने मेटल उठाया। Now these are the countries which are bordering the Mediterranean Sea. You have to fit in these countries and you can remember like that, ठीक है। metal is the metal consists of the countries of the African continent, north of African continent, this है ना, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt, okay। Okay, next question. Yes, you have to be aware about this type of question also, if you are traveling from one national park to another national park, how many states you have to cover, or if you are traveling from east to west, है ना, to some point, तो कितने स्टेट आपको पास करने पड़ेंगे, then the states, है ना, through which Tropic of Cancer passes, है ना, या state through which IMT passes, है ना। तो ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, एंड द कैपिटल ऑफ विच स्टेट इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी यू हैव टू फ्रेम ऑन योर ओन एंड फाइंड आउट द आंसर्स, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन, इफ यू ट्रेवल रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, विच what is the maximum number of states within India through which you can travel, including the origin and the destination? Now, for solving these type of question, you must know कि भाई कोहिमा and कोट्टायम है कहाँ। तो कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पहले तो ये भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो यू मस्ट नो कि उससे भी पहले नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हमारे इंडिया में एंड नंबर ऑफ यूटीज कितनी है। बहुत कंफ्यूजन है इसमें भी, कोई 28 29 ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो ये क्लाउड भी क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। मैं नहीं करूँगा, ये थोड़ा सा आपका होमवर्क है, ओके। तो कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड कोट्टायम यू फाइंड इट इन केरला। तो यहाँ से आप लगा लो कि कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, है ना। तो अगर हम देखें भाई, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से चले, अरुणाचल से आए असम, ये तो आना पड़ेगा, असम से गए वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल आए, उड़ीसा आ गए, उड़ीसा से फिर आंध्र प्रदेश आ गए। अब यू हैव टू ऑप्शन, या तो कर्नाटक से जाओ केरला, या फिर तमिलनाडु से जाओ। अगर कर्नाटक से गए या इससे गए तो भी सेम नंबर आएंगे, कितने आएंगे, टोटल नंबर विल बी 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, 6 and 7, okay। So I hope this session finds you or provides you some important information with respect to the mappings, how we have to look the maps, which areas have to be looked into from the point of view of the current affairs, ठीक है। Any questions? No questions? Good, thank you.